हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप जंक्शन। तो आज हम लोग फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर में से जो एनसीईआरटी लाइनर्स है उससे ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले। क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी आप अपने आप को सेल्फ एवेलुएट कर सकते हैं। इससे आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत सारी हेल्प भी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज path length is a scalar quantity. It has magnitude only and no direction. A scalar quantity can be negative also. So this statement is absolutely true. Second is the magnitude of displacement may not be equal to path length traversed by the object. Magnitude of displacement may be greater than path length traversed. तो ये तो गलत है. You can also cross check in NCERT. अगर मैं करने लगी तो फिर बहुत टाइम जाएगा, इसलिए आई एम नॉट डूइंग इट. देन average speed does not tell in what direction object is moving, but it tells about the type of path followed by the object. So this is wrong. Average speed may not be equal to magnitude of average velocity, and average speed during motion of the object is non-zero. So this is correct. For uniform motion, velocity is same as the average velocity at all instants, and magnitude of instantaneous velocity is equal to instantaneous speed at that instant. So this is also correct. आप प्लीज़ एनसीईआरटी में भी चेक कीजिएगा तो आपको भी पता चलेगा. नेक्स्ट, सिक्स्थ, on a plot of velocity versus time, the average acceleration is the slope of straight line connecting points with initial velocity to final velocity. So ये भी बिल्कुल करेक्ट है. इसके बाद position time graph with positive acceleration curves upwards, downwards for negative acceleration, and is a straight line for zero acceleration. So absolutely this is correct. जो एनसीईआरटी में ग्राफ्स दिए गए हैं उनको आप में ध्यान में देते हुए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है और ग्राफ के क्वेश्चन में भी आपको इसकी बहुत हेल्प होगी. An object moving along negative direction on a straight line with negative acceleration is slowing down. It is not always correct. Sometimes it is correct. Area under curve for graph between velocity time gives the distance covered over a given interval of time. कुछ भी, ये तो incorrect है. Acceleration and velocity cannot change values abruptly at an instant. Changes are always continuous. बिल्कुल सही बात. ये तो बहुत लॉजिक वाली बात हो गई. इसके बाद in case of constant acceleration, average velocity is equal to arithmetic mean of initial and final velocities. तो ये भी हो गया correct. The origin and positive direction of an axis in one-dimensional motion is a matter of choice. You should first specify this point before you assign signs to quantities like displacement and velocity. तो ये भी करेक्ट है. बिल्कुल एनसीईआरटी में आपको इसका स्टेटमेंट आराम से मिल जाएगा. So the 30th question is, if a particle is speeding up along a straight line, then acceleration can be either in same direction or in opposite direction of motion. तो ये तो गलत हुआ. The zero velocity at any instant does not necessarily imply zero acceleration at that instant. A particle may be momentarily at rest and yet have non-zero acceleration. तो ये हो गया सही. The kinematic equations of motion are true only for motion in which magnitude and direction of acceleration are constant during the course of motion. So this is also true. An object is released from great height and moves towards Earth. If during fall gravity disappears, object will stop its further motion. So no, this is not correct. An object in motion under constant acceleration always covers distance in ratio 1:3:5 and equal intervals of time. Not always. There are specific conditions for that,
which are obviously mentioned in NCERT textbook. An object thrown vertically upward with speed greater than 9.8 meter per second always cover a distance of 4.9 meter during last second of upward journey. तो ये सॉल्व करके देख चुके हैं हम. एक बार आप NCERT में देख लेना तो आपको भी समझ में आएगा. तो ये है करेक्ट. Then two objects are projected up from edge of a cliff with initial velocities v and 2v. The graph showing time variation of relative position of second object with respect to first will be straight line. No, it won't be a straight line. Two trains moving along straight tracks in same direction take less time to pass each other than to cross each other moving in opposite direction. No, this is not correct. So ये हो गए हमारे 20 statements of द चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. मैं और ऐसे वीडियोस अपलोड करने का ट्राई करूँगी बिकॉज दिस आर वेरी मच हेल्पफुल, और ये भी करना बहुत ज़रूरी है फिज़िक्स के लिए अदर दैन न्यूमेरिकल्स, बिकॉज अभी नीट में या फिर जेई में भी बहुत एसेशन रीज़न ट्रू और फॉल्स जैसे क्वेश्चन फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट में भी वो इंक्लूड कर रहे हैं. तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़. And do follow, share and subscribe our channel for more NCERT based content like this.